हेलो सर। यस नेहा। सर एक डाउट था। लेवल 2 के मॉक 17 को होंगे ना संडे को? जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट check 17th or probably on 16th rather, 16। because because on 10th tomorrow you have soft skills, आज आपका रिवीजन है तो 16th को है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, जस्ट पूछना था बिकॉज लास्ट टाइम आपने 17 संडे बोला था ना, सो वही कंफर्म करने के लिए कि सैटरडे या संडे कर। ओके, नो probably it will be on this Saturday because तो क्या है कि आपका ये मतलब आज रिवीजन है, संडे को कल आपका सॉफ्ट स्किल्स दोनों खत्म हो जाएगा, तो फिर वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट इन बिटवीन। ओके। एंड आप प्लीज क्वेश्चंस दे सकते हो क्या कि क्या क्या है? पूरा पीडीएफ तो नहीं करना पड़ेगा ना, लाइक नो नो 146 नो नो नो, पेजेस का? क्वेश्चंस तो नहीं है लेवल 1 की तरह मेरे पास इसमें भी। बट यस, आई कैन जस्ट टुडे एक बार मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर आई विल जस्ट हाईलाइट यू द टॉपिक्स एंड द हेडिंग्स दैट यू नीड टू गो थ्रू। ओके। ओके सर, थैंक यू।
We are still waiting for some more people to join, right? Actually, I think that 9:30 time has been communicated, and because of which I guess rest others have not joined. We will wait for some more time and then we will start. Okay. Yes, sir.
We will wait for 5 more minutes and then we will start.
Yeah, hello. Good morning, everyone. Let's start then. Am I audible? Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yeah, so have you gone through all the level 2 topics? Yeah, everyone. लेवल 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई कि नहीं? So this week I'll start, sir. Okay. Let's do one thing. I will be sharing that PDF again. Just a minute. Okay, everyone able to see the PDF? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now see, what I will be suggesting is, see, whatever topics I'm mentioning today or whatever questions I'm mentioning today, please make sure you write it down. And if possible, I will be directly writing those questions in the chat box. It will be easy for you also. Okay. So the first topic is asset management. Any doubt in this, first of all? No, sir. Okay, so basically see, ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यूज में भी बहुत जगह पे पूछा जाता है. So the basic questions which can come over here directly, I'm writing it down in the chat box. Okay, what is asset management? You need to give examples also. Then what are mutual funds? Then give examples of equity mutual funds, debt mutual funds, and balanced mutual funds. Okay, along with their NAVs. That is more important. Okay. किसी को याद नहीं है क्या? या हेलो, किसी को याद है NAV का फॉर्मूला? Am I audible? Yes, sir, you are. Okay, ठीक है. तो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू द. नहीं पता है तो मना कर दो. आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है. ठीक है, नहीं पता है ना NAV का फॉर्मूला? No, sir. नहीं, बाकी सबका? आकाश? Asset minus liabilities divided by total number of shares. आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. नो, नो शेयर्स. आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यहाँ पे Sorry. बोलना. शेयर्स. हाँ, outstanding हाँ, units. Yes. प्लीज मेक श्योर आप यूनिट्स बोलना. NAV के ऊपर, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स में शेयर्स का वर्ड यूज मत करना. ठीक है. So then this are the okay, then one more questions which will be coming over here. It will be related to this. Who are the participants of mutual fund companies? ठीक है. तो उसमें आपको वो पूरा जो एक ट्री वाला डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे ट्रस्टी, स्पॉन्सर, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, रेगुलेटर, फंड मैनेजर्स, देन योर ब्रोकर्स और एजेंट्स और ट्रांसफरिंग एजेंट्स, ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स, ये सब आपको पहले तो नाम बताने हैं. एंड फिर प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि हर एक का रोल क्या है
role of all the participants. That is important. Okay, make sure that you are aware about all these things. Okay. Now for hedge funds, as far as this thing is concerned, let me just share one image. Recently I have got it one. Okay. Yeah, so what are hedge funds? ये दोनों का features I've already shared in the group. Okay, in the WhatsApp group. ठीक है, तो वो please पूरा पढ़ लेना. That is more important for you. Okay. So hedge funds के questions directly आते हैं. Also important from the interview perspectives. So what are hedge funds? You can just write it down. ठीक है. Then yes, this is very, very much important. Okay, let me just write it down. What is master feeder? Side by side funds. Then which was the third one? Which is, yeah, master fund and hedge funds and management fund accounting. Okay, yeah, this is important. Okay, this is another question that you need to prepare. Then most important, what is fund accounting? Please explain with examples. Okay, फंड अकाउंटिंग क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. ऐसे मान के चलो ये मैंडेटरी है. ठीक है, और यहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स मत बोलना. सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? हेलो, गुड मॉर्निंग Yes, sir. एवरीवन. Yes, sir. ठीक है, बाकी Yes, सब yes. सो रहे हैं क्या? राधा, मिताली? Sir, voice is not clear. Voice is not clear. Everyone facing the same problem? No, sir. Then Radha, I think that there will be internet issues at your end. Shivanjali and Sneha, what about you? Voice is clear? Yes, sir. Clear, sir. Okay. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. शिवांजलि, वेयर इज रचना? तो मैसेज तो आया था, शी हैज नॉट जॉइंड. नो आइडिया सर, मैं ओके, रूम पे नहीं हूँ. ठीक है, ठीक है. ओके. See, the next question, most important is your trade life cycle. See, most important topic या chapter मान के चलो कि जिसमें से maximum questions you can expect. So basic question, what is trade life cycle? अब see, यहाँ पे confusion कैसे हो सकता है, आपको कैसे इसका reply करना है? From front office, middle office and back office role and process, rather processes, roles को बाद में देखते हैं. ठीक है, तो आपको ये सब जो हमने वो प्रोसेसेस देखा था, इफ यू रिमेम्बर, which were the processes? This trade execution and capture, trade enrichment, ठीक है, trade validation, trade agreement, transaction reporting and settlement instructions. ठीक है, इतना आपको पहले तो उनके नाम याद रखने हैं. ठीक है, so say for example you have to mention trade execution और capture कहाँ पे होगा? Front office पे होगा. See, this is clearly mentioned. Trade enrichment can happen in the middle office. Even the trade validation can happen in the middle office. Trade agreement can happen in the middle office. लेकिन trade transaction reporting and settlement instructions will be in the back office. Is it clear कि कैसे आपको बोलना है पूरा trade life cycle? और ये सब processes आपको पता होनी चाहिए. Say for example, if I am asking, a question can come directly over here. In that case will be, what is difference between trade execution and trade validation? Okay, or it can be difference between trade enrichment and trade validation, या फिर trade execution, trade enrichment. That means you need to understand what all these processes are about. तो इसलिए इसमें PDF को go through होना. ठीक है, make sure that it will be, you will be able to understand each and every processes. Don't mix up, do not mix up all the processes. ठीक है. And yes, one more important thing, this mocks will be conducted by one external faculty. This time I'm not taking level 2 mocks. Okay. Okay. So वो फैकल्टी थोड़े मतलब सीरियस है और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. तो जस्ट मेक श्योर योर कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड इन दैट केस. ओके, प्रिपरेशन अच्छे करके जाना.
वो कोलैप्स करोगे तो वो इट विल बी वेरी मच पुअर इन हिज पर्सपेक्टिव, ठीक है। देन व्हाट इज ट्रैक्स, ठीक है, वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, नॉट दैट मच, बट या मॉडरेट लेवल के हिसाब से आई कैन स्टिल पुट इन the list of questions. Everyone is able to get the questions in the chat box? Yes. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, what is tracks? That is more important. Okay, go through the process. Now most important question, यह हमने ये प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है, how is settlement of trades carried out? ठीक है, तो सी सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है, अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा वहां पे एक बॉक्स दिया जाता है, और in that particular box you will be able to identify a list of all those particular phases of trade life cycle, right? In that particular case you need to identify how each and every phases will be. So you need to explain how the settlement of the trades are taking place, how the methods of transmission settlement instructions are provided, both electronically as well as manually. Okay, electronic means and manual means, manual मतलब through human approach or through man-made approach या जो भी आपको बोलना है, और through manual means. Please explain this. Just एक settlement का instruction का definition बोल के रुक मत जाना वहाँ पे, ठीक है? Then the next topic, another important one. यहाँ पे please ensure that you explain a little bit from the IT perspective. I hope everyone remembers that explanation on SQL. याद है सबको example reference data management का, database management मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था? Yes, yes. Yeah, so what is reference data management? A direct question can come. What is, so for that you need to understand what is data administration and data management. That will be more important. Okay, is it clear everyone? Any doubts so far? No, sir. Yes, sir. Okay, यहाँ पे ये सब चीज का पता होना चाहिए. So say for example if I am writing what is master data, okay, then transactional data and reference data, ठीक है, ये तीनों questions can come directly over there. Okay, yeah, one more questions. What is difference between dynamic data and static data? Yeah, can anyone tell me what is the difference between dynamic and static quickly? So dynamic data is that data which keeps on fluctuating according to the situations. And static data is the data which is constant, like fixed. Okay, please make sure you give some examples. Okay, so say for example, static data, the name of the client will be static. Okay, but the transactions which are happening either from the equity perspective, the values of those securities will be a dynamic data. So you can just give any example that a client from London who is actually investing into the Indian stock market is an example of a static data. His address, his telephone number, his email ID cannot change. Whereas the prices of the Reliance shares on the stock market which are being listed can have a or can be associated with the dynamic data. ठीक है, थोड़ा explanation खींच के बोलना. Okay, clear to everyone how you should to answer? Yes. Okay, let's move on further. Any queries up till now? Any doubts or queries? No, sir. Okay, next here are your counterparty identifiers. ठीक है, तो इसमें से already मैंने explanation के time पे भी बोला था. Please remember any 3 to 4. You can remember this OMGO or Swift or Market or anyone. Please make sure of remembering that standard numerical procedure. Procedure in the sense वो 9 digit का है, 11 digit का है, 12 digit का है, alpha numeric है. तो पहले कितने digits उसमें वो country code के हैं? Remember everyone? फिर how many codes for the security for the which whether it is money market or equity market, और लास्ट में 0 और 1 आता था, याद है सबको? So what are counter party identifiers? Okay, purpose बताना है, please explain purpose. Okay,
and with one example. Then remember 3 static data definitions. So OMGeo can be one, Swift can be another, or yes, and yes, please also remember full forms. Okay, clear to everyone so far? QCP is another one. Okay, so QCP or CDOL, you can still take a QCP or CDOL. Okay, you can add it over there, or even Valorant. जो आपको सही लगता है, any 3 to 4, please remember that. Okay. Next, pricing in the market of the OTC derivatives. This is not important, yes, but what is country code and holiday calendar? That is important. Okay, so you need to understand from, of course, technical perspective, what is the purpose of country code and holiday calendar. Okay, do go through double taxation theory. Okay, up till now, any doubts, guys? No, sir. No, sir. Yeah, Rohit, what about you? No, sir. Radha? No, sir. Rachna? Rachna, you joined? सर मेरे थोड़ा सा नेट हेलो Okay. Yes, go on. Yeah, go on. ठीक है. Anyways, not an issue. I hope everyone is at least checking the chat box. ठीक है? Yes. Okay. Now let's move on. See, corporate actions मैं यहाँ पे नहीं cover कर रहा हूँ, मैं नीचे जाके cover करूँगा. ठीक है? नीचे already we have one separate topic. Now, ISDA schema for trade identifier not required, but yes, most important is this one. What are ISDA master agreements? Okay, please explain architecture and key terms associated with it. Okay, how that is working you need to understand. Okay, next question can be, what is ISDA documentation, or what comes under ISDA documentation? ठीक है, this can be asked. फिर ये पूरा आप स्किप कर सकते हो, उसके बाद का कंफर्मेशन ये सब नहीं चाहिए. Yes, then the next question will be definitely, what are corporate actions? Please explain जितनी भी है. Yeah, let me write down what are or what is difference between mandatory and voluntary corporate actions. Give or explain corporate actions such as dividends, bonus shares, stock split, rights issue, pari passu. Then which one is left? Cash dividends हो गया, book closure हो गया, reverse stock split. Okay, और उस yes, restructuring of the debt. Spin off, most important. Okay, पूछा जाता है, one of the important ones. Delisting, bankruptcy, and redemption. जितनी भी corporate actions है, सबके सब definitions, examples, clear theory should be explained. ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, इसको लाइटली मत लेना. ठीक है, give examples of buyback, मतलब buyback मतलब recent buybacks from practical theory, from practical application perspective, which means आपको ये जाके चेक करना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली कोई कंपनी ने बायबैक किया हुआ है, या स्टॉक स्प्लिट किया है, या बोनस दिया है, या डिविडेंड दिया है. जितने भी एग्जांपल्स है लाइव मार्केट्स के आपको कंप्लीट करने होंगे वहां पे. ठीक है, गिव रीजंस फॉर डीलिस्टिंग ऑफ द कंपनी.
It's another question. ठीक है. Voluntary में that is fine, not a big major issue. ठीक है. Then what are the stages in rights issue? ठीक है. Practical example and importance of the dates related to dividend. Dividend में याद है सबको वो dates वगैरह हमने देखा था. कौन कौन सी डेट थी? Does anyone remember? Ex dividend rate. Okay, then एक ही हुआ, उसके अलावा? डिक्लेरेशन डेट. करेक्ट. तो ये जो 4-5 जो डेट्स हमने जो चेक की थी, you have to remember about all those particular dates. This is more important for you. Okay. Yeah. So trade date, ex date, record date, settlement date, payment date, declaration date एक पेंडिंग है और कोई तो नहीं है शायद. Payment date and payout date are one and the same. ठीक है. ठीक है. Go through this. This is more important. Clear up till now? Any doubts? No, sir. Okay. Why company declares dividends? ठीक है. Of course profit sharing होता है. Second thing, investors को happy रखने के लिए satisfaction उनका भी आना चाहिए, so that they will be able to invest into the company for a longer term. That could be another possible reason. Few others you can definitely search out on Google and just write it down. Okay. Then what is the process of rights issue? वो हो गया. What are voluntary actions हो गया. Yeah, what are nil paid rights? Okay, mandatory हो गया. Yeah, most important, what is the life cycle or trade life cycle for corporate actions? Refer to page number 107. ठीक है. Do not forget this. ये थोड़ा वो बोलते हैं ना ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Why? Because in the trade life cycle we have only seen that security का ट्रांजेक्शन होता है, सेटल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ये सब करते हैं. लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शंस है तो उसकी ट्रेड लाइफ साइकिल कैसे होगी वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. देन व्हाट इज कोलैटरल मैनेजमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. एक्सप्लेन पर्पस, recent examples if any. ठीक है. और legal perspectives and even explain collateral management framework. Clear? Then what are different types of collateral? Okay. And who are involved in the transaction of collateral management? ठीक है. Is it clear up till now? Any queries, any doubts, guys? No, No, no? sir. Okay. ठीक है. Why collateral, parties of collateral management not required? ये सब theories थोड़ा, हाँ, yes. You can just remember this. What are pros, cons, or advantages, disadvantages of collateral management? ठीक है. Then what is tri-party collateral management? What are its benefits? Explain with example. Clear everyone? Tri-party collateral managements. Refer to page number for this 119. Okay. Then
reconciliation, stock borrow lending. Okay. How risks are managed in collateral? Okay. Which are the different risk factors in collateral? So see guys, collateral management, one of the important topics. Again, do not miss this topic. Okay, itna I think more than enough. Then comes your reconciliation. So directly, what is reconciliation can be your question. Okay, here please explain also from accounting perspective to prepare journal ledger entries examples, which means debit and credit entries. Are everyone aware about all this debit and credit entries that we have seen in the reconciliation? Guys, आपको पता है, आपको clear है वो topic? Yes, sir. Okay, ठीक है. Please go through certain basics of accounting reconciliation. अगर कुछ मुझे videos मिलता है तो I will post it in the group today. You can just go through. लेकिन basics आपको पता होना चाहिए. Questions are being asked in the interviews also for reconciliation. ठीक है? Then what is life cycle of reconciliation? That is more important. Okay. What are different types of reconciliation? That is also important. Then what is nostro account and how you carry out reconciliation for nostro accounts? Okay. That is another one. Last topic, what is stock borrow lending? Explain entire process of SBL. Okay. What is triplicate SBL? Okay. What is difference between SBL and repo agreements? Last topic that is more important. What are pros and cons of SBL? Okay. How collateral management is carried out in SBL? Okay. And what sort of securities? Yeah. What sort of securities are traded in SBL? Okay. Practical questions will come directly related to trade life cycle, reconciliation, SBL, corporate actions, debt restructuring, and collateral management. Are we done? All the questions have been given more or less. I think this is more than enough for you to prepare for level 2. लेकिन कुछ भी टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक on the YouTube videos or any particular theoretical sessions also. ठीक है? Clear everyone so far? 50 questions I have given from level 2. Yes. Yeah, guys. Any doubt so far? Can you please switch to your video, please? If anyone is sleeping today in the morning, it will be difficult to know. Hello. Please switch to your video. आपकी attendance लेनी है. Okay, चलो. Radha is on. Then बाकी सब कहाँ पे है? Yeah, Aditya. Then Mitali is there. Shivanjali is there. जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका एब्सेंट आज मैं मार्क करने वाला हूँ. सीरियसली. घर पे बैठे हो. सॉरी सर, मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ, लाइक थोड़ी बीमार हूँ ना तो. Okay, तो you are resting. या एंड जॉब करके भी लाइक ऐसे ही बैठ गई, सो स्लीप है. Akash, Sorry. what about you? Yeah, no issues. Akash, आपका कैमरा खराब हो गया. आकाश क्या हुआ?
नहीं सर, कर रहा हूँ। चेक कर रहे हो, ठीक है। रचना, व्हाट अबाउट यू? सेम थिंग? No, sir. ओके, चलो गाइस, नाइस टू सी यू एवरीवन इन द मॉर्निंग। लगना चाहिए ना कि लेक्चर ले रहे हैं, राइट? आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चंस। इतना पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। सी नाउ आई थिंक मोर और लेस ऑलमोस्ट 80% इज बीइंग कवर्ड इन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर इसकी बाहर का कुछ भी पूछा जाता है तो आपको वो अभी स्किल डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा, हाउ टू अप्लाई योर माइंड एंड गिव दोस आंसर्स। लेकिन टॉपिक मोर और लेस विल बी कनेक्टेड विद दिस, ठीक है? So please make sure that you prepare. अच्छा, अनीता is also there. Okay, ठीक है, ऑडियो इशू है, ठीक है अनीता। Okay, yeah. So see, basically this is the only question thing that I was discussing about. More important, please make sure you prepare this level 2 very thoroughly. It will be really, really useful to you in your final interviews and even after you are getting placed in the jobs. Okay, process कैसे वर्क होता है, कैसे समझना है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना प्लीज। मोर इम्पोर्टेंटली वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनकी बहुत खराब है या जिनका अभी भी वो सॉफ्ट स्पोकन वॉइस है, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनका एटीट्यूड का इश्यूज है या व्हाटसोएवर। ओके, एनी अदर डाउट्स गाइस बिसाइड्स दिस? या रचना, अनीता दोनों नींद से जाग रहे हो ऐसा लग रहा है। नहीं, sir. ओके, यू मस्ट हैव जस्ट कम ओवर फ्रॉम द ड्यूटी, राइट? Yes, at 5. एट, हाँ वही, इसलिए तो मुझे लगा। ठीक है, बिकॉज आकाश इज फीलिंग वेरी रिफ्रेश इन द मॉर्निंग। उनको मॉर्निंग ड्यूटी है क्या आकाश? ठीक है, ओके, नो इश्यूज। एनी अदर डाउट्स गाइस इन दिस लेवल 2? थियोरेटिकल है तो थोड़ा प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा वो फ्लो इमेजेस वगैरह आप देख सकते हो। हेज फंड्स का मैंने ऑलरेडी आपको इमेजेस शेयर किया हुआ है। अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन का वीडियो आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप, ठीक है? इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज मच मोर रिक्वायर्ड, बट हाँ, अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे अगर 50 क्वेश्चंस को भी, तो देन डेफिनेटली आई कांट हेल्प ओवर देयर, राइट? थोड़ा तो प्रिपरेशन आप सबको करना पड़ेगा। ट्रेड लाइफ साइकिल प्लीज गो थ्रू इट थॉरली। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रेड लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव से भी आ सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर processes individually, understand what exactly things are happening in trade execution, trade validation, trade enrichment, trade settlement, trade reconciliation. ये हर एक में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? Any doubts now, guys? No, sir. Yeah, Anita, any doubt? No, your mic is mute, I guess. It's not working. Yeah, I am not able to hear you. Okay, you can just type in the chat box, then I will come to know what exactly you are trying to speak. Yeah, Rohit, what about you? Rohit, are you? ठीक है, चलो. Any doubts? No. सर वो सॉफ्ट स्किल के हमारे सर वो सॉफ्ट दो प्रेजेंटेशन पेंडिंग थे। आई हैड अ वर्ड विद कौशल सर। कौन से वो आईपीओ वाले ना? हाँ, वो हमारा वो शायद बॉन्ड कूपन्स और वो एलिवेटर पिच का पेंडिंग था। Like Okay. where to upload that link was expired that was shared on the mail. Okay, so We what we can't can upload do on is, that. तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीकेंड में अगर ऐसा है तो प्रेजेंटेशन वो एक बार हम देख लेंगे। आपका जैसे ही कल मतलब नेक्स्ट वीक में मॉक्स है ना आपको सैटरडे को, तो ऐसा होगा तो हम Yes. संडे को वी विल बी टेकिंग दिस प्रेजेंटेशंस एंड अलोंग विद दिस आई विल आल्सो टेक वन टॉपिक ऑफ लेवल 3। नाउ सी लेवल 3 में सिर्फ आपका फिर 2 ही टॉपिक बचता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो प्रोबेबली व्हाट कैन हैपन इज 17th को प्रेजेंटेशंस रख देते हैं, ठीक है, संडे को, एंड उसके साथ साथ आपका लेवल 3 का एक टॉपिक, फिर 23rd को दूसरा टॉपिक खत्म करने के बाद आप रिफ्रेशर भी मैं उसी दिन ले लूंगा, लेवल 1, 2 एंड 3 कंबाइंड। ओके, तो फिर 24th को फाइनल मार्क्स रख दे क्या फिर? किसको सर? 24 जुलाई। बिकॉज सी लेवल 2 आप अभी प्रिपेयर मतलब जस्ट करोगे, ठीक है, मतलब अभी आपका मॉक्स होगा नेक्स्ट वीक में 16 को, तो दैट मींस आप लेवल 2 तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखे हुए होंगे। लेवल 3 में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं दैट आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, ठीक है?
Just you have to revise your level 1 once again, specifically your options and derivatives, capital money market, वो सब theoreticals है, इतना difficult नहीं है आप लोगों के लिए. Yes. 24th को रख दे. Everyone is feasible on 24th. हाँ 24th को. Yes. No What issue, about sir. Adit? No issue, sir. Okay. Yeah. Mitali, Radha, what about you? It will be all right, sir. Okay. ठीक है. तो क्या है कि उसके बाद आपके सिर्फ HR मॉक्स रहेंगे, तो वो तो आप आराम से कभी भी दे सकते हो. ठीक है. So probably then what will happen is tentatively in the next couple of weeks आपका जो भी HR का पेंडिंग होगा वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. सर फाइनल मॉक्स में सारे लेवल्स के क्वेश्चन होगी या फिर सिर्फ थर्ड लेवल के? No, final mocks will be a combined level 1 plus level 2 plus level 3. सर ऑनलाइन होंगे क्या? नहीं या इट विल बी ऑफलाइन ओनली. एंड प्लीज मेक श्योर अगर आप पुणे में हैं सब लोग, मतलब स्पेसिफिकली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर अवेलेबल ऑफलाइन, तो उस दिन हम ऑफलाइन रखेंगे. इट्स योर फाइनल मॉक्स, सो इट विल बी अ लिटिल बिट लेंथियर आल्सो, वन थिंग. सेकंड, थोड़ा वो इट विल बी गुड इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर द ऑनलाइन ऑफलाइन अप्रोच. इन दैट केस I will strictly recommend it. Even if the time does not permit to me on that case, then also it's fine. So not a big issue. Okay. ओके सर. But just make sure you start preparing now, because now very much lesser amount of time is left for every one of you. Your level 2 is also almost complete. Level 1 already हो चुका है. Level 3 अब सिर्फ 2 topics pending है. ठीक है. And we will even take your presentation on next Sunday. ठीक है. So that वो आपका domain presentation and आपका जो भी वैसा वो assessment है या assignment है उसके related, that will be getting completed. सबका IPO presentation ready है ना वैसे? Yes, sir. Anyone is left in that case? No, sir. ठीक है. हाँ तो फिर नेक्स्ट संडे को ओके. हाँ तो सब हम जिस किसी का भी अगर किसी को नहीं पता है तो maximum 6 to 7 slides. Any IPO any company you can pick it up post 2018. और IPO एनालिसिस में हमने जो भी टॉपिक्स उस टाइम पे लिया था, इफ यू रिमेंबर, इशू साइज, देन नंबर ऑफ, व्हाट वाज द लोअर बैंड, अपर बैंड, okay, who is the registrar, who is that custodian, what is the purpose of IPO, what the company is actually doing, and whether this IPO is who are this lead bankers or lead managers in that particular IPO. This entire list you have to present in that case. Okay, and pros and cons of that company if you can find it. कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली SWOT एनालिसिस किया हुआ है. आई होप एवरीवन नोस व्हाट इज SWOT एनालिसिस. पता है सबको? Strength, weakness, opportunities and Threats. Yes. So SWOT analysis can be done for this IPO companies also. What are their key strengths? What are their weaknesses? What are their opportunities from the future perspective? And what is the current existing market threats? So you can present if you want to, but just make sure that you keep it down to only 6 to 7 slides. Okay, so maximum it can take up to 5 to 10 minutes of presentation. Okay. और जो लोग सर अभी हाँ हेलो सर अभी किसी कंपनी का वॉक इन है क्या इसमें लाइंड अप? हाँ, like this one, any walk in is there? Any walk-in? No, I don't think so. As of now तो कोई एक्सेस न्यूज नहीं है मेरे पास. If अगर कुछ होता है तो definitely I will update you. Okay. Sir, our level 2 mocks will be online or offline? No, I will try for offline. Actually, I want all the mocks offline only, because वो feel factor नहीं आता इंटरव्यू का जो आप लोगों को actually prepare करना है. That is one of Yes, the sir. Please do reasons that offline will be like good for us. Correct. So that is actually because see face to face आप इंटरव्यू जब भी appear करते हो ना तो वो एक pressure factor realize होता है. वो ऑनलाइन में इतना शायद आई एम नॉट श्योर. दिस इज माय पर्सपेक्टिव एंड माय ओपिनियन आल्सो. some might feel that, some might not feel that, but if you are giving an actual face to face peer interviews, I hope someone you are already have given that level 1 mocks offline, right? तो आप लोगों को पता है कि कैसा फील आता है आपको जब डायरेक्टली इतने सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर बॉम्बार्ड होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन फील दैट प्रेशर. ओके.
Sir, level 2 is online or offline? Mostly it will be offline. Okay, sir, it's better. हाँ, वही तो डिस्कशन अभी चल रहा था ना. I will try to keep it definitely for offline. Just make sure these rains do not crash down our plans. Yeah, any other doubts guys related to level 2 or interview? Yeah, one more thing. इंटरव्यूज के लिए थोड़ा आप ग्रुप प्रिपरेशंस या आपको जिस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है वो कर सकते हो. स्टार्ट प्रिपेयरिंग द टॉपिक. और ये सभी ग्रुप्स में मैंने अभी एक ये इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कर सकते हो, एक दूसरे को कॉल करो. ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ 2 ऑफ यू आर देयर, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू ईच अदर. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ. जिनका सॉफ्ट स्किल्स अभी भी वीक है, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश आर्टिकल्स फ्रॉम फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. ठीक है, सो दिस विल रियली हेल्प यू टू एटलीस्ट आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, वहां तक के लिए तो अच्छा रहेगा. ठीक है. ओके सर. या एनी अदर डाउट्स? नो सर. ओके, तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिया है क्या, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला था? एवरीवन हैज गॉट इट? यस सर. यस. Yes, sir. ठीक है, जस्ट कॉपी इट इन द नोटपैड और वर्ड फाइल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन दिस लेवल 2 टॉपिक्स. कल आपका सॉफ्ट स्किल है. जिनको अभी भी सॉफ्ट स्किल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या लगता है कि मैं इंटरव्यू में मेरा सॉफ्ट स्किल्स बहुत वीक हो रहा है, प्लीज आस्क कौशल सर टू हेल्प यू आउट इन दैट केस. डायरेक्टली अभी उसके ऊपर ही वर्कआउट करो, बिकॉज अदर देन दैट यू डोंट नीड टू मच ऑफ एनी अदर एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स टू लर्न अबाउट. ओके, and start, you can even do is even start watching certain YouTube videos related to like how interview should be cracked. Yeah, what could be the 10, top 100, top 50 tricks to crack an interview and all those things. Start watching that because now time is left. uh, in that particular case it will really help you. Okay, and you will also be able to understand what different type of HR questions can come in the interview. Okay, it's not only just restricted to tell me about yourself or what are the strengths and weaknesses and how you can be able to work as a team player and all those things. It can come more than that. Some case scenarios can also be given, so prepare accordingly. Any other queries? Good morning everyone. सो गए क्या सब? No, sir. ओके, ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप प्लीज अभी थोड़ा रॉबस्ट लेवल के ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थोड़ा और कॉन्क्रीट कर दो. एक बार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो गया, योर इंटरव्यूज विल बी सीरियसली फैबुलस. इतना डिफिकल्ट नहीं है इंटरव्यू को क्रैक करना. एक बार कंसेप्चुअली हर एक कंसेप्ट को समझ लो, देन इट इज वे मच इजियर. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू गेट टू मच इनटू ऑल दिस न्यूएंसेस आल्सो लेटर ऑन. ओके, yeah, any other doubts? Akash, Anita, Mitali, what about you? Any queries? Sir, actually, I have a query in hedge fund. Yes, go on. I didn't get side-by-side funds and master feeder funds. Will you please explain it? Okay, sure. See, master feeder funds में क्या, hedge funds is completely different. That is one category. But basically, master feeder fund will be acting as like, say for example, there will be certain different mutual funds across Asia. Say for example, India से HDFC म्यूचुअल फंड है, सिंगापुर का खुद का एक म्यूचुअल फंड है. तो वो लोग क्या सोचते हैं, एक साथ में एक टीम बना के लेट अस पुट ऑल दिस मनी इनटू वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ऑफ यूएस. से फॉर एग्जांपल आईएनजी. ठीक है, आईएनजी वहां की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है यूएस की. तो ये जितना भी इनके पास भी तो पैसा ही आ रहा है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास हो या सिंगापुर म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो. ठीक है, तो दे विल बी पुटिंग और फ्लोइंग दिस पर्टिकुलर फंड्स इनटू दिस यूएस म्यूचुअल फंड. In that case, these Indian mutual fund companies and Singapore-based mutual fund companies are termed as feeders, and the US-based mutual fund company, it is termed as master in that case. So master and feeder. So basically, this particular fund houses are feeding them all the cash flows
so that they are actually speculating that this US based fund will be performing much better than what they are performing in the market. Okay, उसको बोलते हैं master feeder. Side by side कैसा होता है? It is more of like you are having the same investment philosophy and same investment strategies, which means, say for example, जो fund manager है, वो ये सोचता है कि जो भी companies जिसका book value या तो फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 से कम है, फिर उसका डेट जीरो है, फिर उसका ग्रोथ हर साल में 10% ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ बेसिस के ऊपर है, तो सेम स्ट्रेटेजीज विल बी अप्लाइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कंपनीज एंड सेम स्ट्रेटेजी विल बी अप्लाइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द फॉरेन बेस्ड कंपनीज. दो अलग अलग जगहों पे वो इन्वेस्ट करता है साइड बाय साइड, वन इन इंडिया एंड अनदर से फॉर एग्जांपल इन यूके, but the criteria for the selection of the companies will remain the same. Which is the criteria? Say for example, your price to earning ratio is less than 30, the companies are debt free, the compounded annual growth rate for the companies is more than 10%. ठीक है? Yes, sir. Yeah, any other queries now? Sir, it is necessary to also prepare level 1 or not? किसमें लेवल 1 का करना चाहिए या नहीं? लेवल 2 सिर्फ के लेवल मॉक्स 2? में हाँ, लेवल 2 के मॉक्स में. थोड़ा रिवाइज करके रखना, बिकॉज दैट फैकल्टी हाँ. माइट आस्क क्वेश्चंस एंड माइट नॉट आस्क. आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम. वो कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हम, बट अगर अगर थोड़ा बहुत एक बार रिफ्रेश कर दोगे तो मतलब रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा. Just go through the concepts. ठीक है? हाँ, but the ratio will be higher in the sense, say for example 70% can be for level 2 and 30% for level 1, या 80% for level 2 and 20% for level 1. ऐसा कुछ हो सकता है. Yes sir. ओके, तो लेवल 1 में आपको सिर्फ थियोरेटिकली स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर्स की करनी है. स्वैप्स आपको ऑलरेडी पता है. Option derivatives, go through that strategies once again. Okay, just understand what is call, what is put options, what is call spread, what is bull, yeah, put spread. Okay, and try to understand the differences between capital market and money market. Why people invest into fixed income securities? What is the duration? What are the examples? What is the difference between junk bond and zero coupon bonds? ऐसे questions आ सकते हैं आपको normal level पे. ठीक है? बट आई थिंक द कंसेप्ट अगर एक बार आपका सबका क्लियर है related to level 1, then definitely that will be fine. That cannot be a major issue then, right? Yes. Any other questions, guys? Sir, current affairs may like what will have to prepare for investment banking? Which kind of questions they will ask? Like if they will ask or not in Okay. level 2. Related to level 2 you are asking? Yes. And like overall, like see, for example, so say for example अगर corporate actions है, तो corporate actions में हमको पता है कि dividends आता है, stock split आता है, या फिर rights issue आता है. ठीक है? तो recently अभी जैसे कल ही TCS ने dividend दिया है, right? So you can just give an example how much amount of dividends have been given. Then question ये आ सकता है कि why dividends are given? So definitely profit distribution, ensuring that the objectives of the investors is met by the company. ठीक है? अगर मैं टीसीएस में इन्वेस्ट करता हूँ तो तब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कर रहा हूँ, राइट? आई एम आल्सो इन्वेस्टिंग बिकॉज आई वांट डिविडेंड्स. फिक्स्ड इनकम होगा ना मेरे लिए वो. Correct. So you have to explain that dividends will be working as a fixed income securities in that case. Why? Because they provide higher returns compared to the fixed income securities. Now fixed income securities में ज्यादातर bonds है जो ज्यादातर आपको 8 से 12% या ज्यादा से ज्यादा 15%, if in the case they are not junk bonds. Junk bond है तो फिर 20-25% तक जाता है रिटर्न. लेकिन we know that there is credit default risk related to that. So we will not prefer it. On a safer side, 8 to 10% or maximum 12% returns is considered to be very good in that case. So if you are holding TCS, then or buying TCS shares, then you are not only buying for the purpose of capital appreciation, but also for the purpose of getting dividends, which in turn will be working like fixed income securities. Okay. Okay, sir. Yeah.
Then in another case, definitely you can go for this examples of debt restructuring. अगर कोई कंपनी है जिसका इक्विटी था, रीपे नहीं कर रहे हैं लायबिलिटीज, या डेट बहुत ज्यादा हुआ लिया हुआ था, तो उन्होंने अगर डेट से इक्विटी में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, ऐसी कोई एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज यू कैन जस्ट चेक इट ओवर देयर. ओके. कोलेटरल मैनेजमेंट में तो डेफिनेटली गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट गोल्ड लोन, बेस्ट एग्जांपल, या रियल एस्टेट हाउसिंग लोन. सो एनी रिसेंट एग्जांपल्स आपको थोड़ा वो गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा इसके रिलेटेड. ठीक. Okay, sir. Yeah, any other queries? Yes, any other guys or कुछ? No, sir. Everything is clear. Okay, ठीक है. Yeah, Shivanjali, what about you? No, sir, clear. Clear है, चलो. Okay. Rohit, all prepared for level 2? नो सर. सर इतने सारे क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन हो रहा है. अगर कुछ क्वेरी आती है तो मैं आपको पूछ लूंगा ग्रुप पर. ठीक है. But I think Yes. see, you are having around 7 days of time. 50 questions है. हर रोज के अगर 7 questions भी करते हो तो I think that will be more than enough. And I think इतना Yes, time yes. मिल ही जाएगा आप सबको. I Yes, have really simplified for you. ठीक है. Everyone rather. आप लोगों के लिए थोड़ा easy कर दिया है अभी. Actually, I don't have any other list also. Otherwise, I could have shared it. But let me just check if anything else is there with me. So, Yeah. so can you please explain that dividend like date straight date extent? Dividend? थोड़ा डिविडेंड्स के वो जो डेट्स है ना,
record date, settlement date, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. Okay, just a minute. Record date, ex bonus date, payout date, and declaration date, right? Which are at dividends में. Yes. Okay, see, record date का मतलब क्या होता है कि it is this date when the investor need to own that shares to get eligible to participate in the corporate event of dividend sharing. ठीक है? So say for example, अगर मैं ये बोलता हूँ कि dividend आपको कब दिया जाएगा, तो जो डेट अनाउंस होती है, ठीक है, but before the record date, announcement date is different and record date is different. Do not confuse over there. Announcement क्या होता है कि announcement ने कर दिया 2 महीने पहले, तो अगर आप ये see, let me show that example also. See, this is the example. So say for example, August 5th, 2012, the company is declaring a dividend payable on October 2, 2012. ठीक है? Announces that the shareholders of the record on the company's books on or before 26 September are entitled to get the dividend. The stock then would go ex-dividend on 24th, which is 2 business days prior. Here the declaration date. Declaration is which one? The date on which the board of directors announced the dividend to the shareholders, which will be paid. तो कब announce हुआ था? August 5th को. ठीक है? Payable date कब है? October 2, 2012. Record date कब है? Record date is 26th September. Ex-dividend is 24th. And payout will be generally done on October 2 only. ठीक है? X bonus or X dividend is like giving an effect to the stock prices sometimes, if it might not be necessary, but हाँ कभी कभी होता है. तो डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है सबसे पहले जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि इस तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसके पास शेयर है उनको डिविडेंड दिया जाएगा. तो August 5th इज योर डिक्लेरेशन डेट. कब तक दिया जाएगा कि जिसने 26 सितंबर से पहले जिनके डीमैट अकाउंट्स में वो शेयर्स हैं उन सबको डिविडेंड दिया जाएगा. सो दैट इज योर रिकॉर्ड डेट. How the prices of the stock will be adjusted, that is known as X bonus or X dividend date, which is here 24th of September. और payout date कब है? आपका 2nd of October. So आपके savings account में कब आपका dividend आएगा? On 2nd of October. Is it clear now? Yes, sir. Okay. And yes, one more thing. Please even ensure of understanding that concept of arbitrage, hedging, and speculation. Huh? It can come in the stock borrow lending, or it can even come in the any other like hedging fund companies also. I hope everyone is aware about those 3 strategies. Hedging क्या होता है? We are trying to mitigate the risk. Speculation is like predicting the future course of action, or we are predicting the future prices. And arbitrage is taking the advantage from 2 different geographical territories or 2 different set of exchanges. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, then I think more or less everything is covered. Any other queries? You can just drop me a message otherwise. But also just go through certain videos also of these topics. जिस दिन अगर आप ट्रेड लाइफ साइकिल के ऊपर थियरी कवर करते हो, उसके क्वेश्चंस कवर करते हो, उसी दिन सिमिलरली जस्ट वॉच 1 or 2 यूट्यूब वीडियोस ऑन ट्रेड लाइफ साइकिल. आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर रिकॉल करने के लिए फ्रॉम द प्रोसेस परस्पेक्टिव. सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट एक्शंस में डिविडेंड या बोनस इश्यू या राइट्स इश्यू ऐसा कुछ देखते हो, तो उस केस में भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इफ यू आर वाचिंग द वीडियोस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस. ओके. Connect your visuals and theoretical learning so that it will be easy to recall all these things during the time of interview. It will seriously help you. Okay. Sir, when you explain the trade life cycle, once you tell all 11 stages, then you explain one by one, or it not? नहीं सिर्फ आपको पहले तो ये समझाना है आपको कि व्हाट इज ट्रेड लाइफ साइकिल. ठीक है. Okay. उसके अंदर के आप ये 11 स्टेजेस आप समझा रहे हो, मतलब नाम पहले बोल रहे हो, फिर वहां पे रुक जाओ. डोंट वहां से आगे मत बोलना. व्हाई? बिकॉज सी सामने वाले को 11 स्टेजेस एक्सप्लेन करने जाओगे तो ऑलमोस्ट लाइक 3-4 सप्लीमेंट्री जैसा आंसर हो जाएगा. राइट. Right. Too long. In that case what you can do is उनको क्वेश्चंस के लिए वेट करो. फिर या तो फिर उसको पूछो कि सर डू आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस 11 स्टेजेस, नंबर बोलना 11 स्टेजेस, तो ऑटोमेटिकली वो मना ही कर देंगे. दैट इज वेरी श्योर फॉर दैट. ओके. Okay, sir. लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये 2 स्टेज कोई भी उसमें से आप समझा दो, तो वो फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड वैलिडेशन, या तो जो कुछ भी वो आपको पूछ रहे हैं, सेटलमेंट या एनरिचमेंट जो भी है. ठीक है. Yes, sir. हाँ. Any other queries?
सी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा मगअप तो करना पड़ेगा, कुछ कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, तभी जाके वो थोड़ा आपके लिए इजी होगा. Otherwise difficult to explain directly. Certain keywords has to be mentioned while answering the questions. Okay. Yeah, any other queries? No, sir. Okay, then shall we close the session then? कोई भी queries हो anytime you can drop me a message. ठीक है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप में भी आप सी इफ एनीवन इज एबल टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट, अगर किसी ने ग्रुप में मैसेज डाला से फॉर एग्जांपल anyone is putting what is trade life directly trade life cycle का तो नहीं, but yes what is corporate actions, then definitely someone can even write the answers in the group. ऐसा मेरा आंसर के लिए वेट करना जरूरी नहीं है. if anyone is knowing it definitely they can try, so that आपको भी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी वो नॉलेज शेयरिंग से बेनिफिट होगा. ठीक है. So try to help each other and make sure that you are following the principles of team working. Yeah. Any other questions? No, sir. Okay. Okay, then guys, I am closing this session. I will be sharing that set of questions once again in the group. Notepad की फाइल में अटैच कर रहा हूँ. Okay, just go through it. And इसके अलावा अगर आपको पूरा मतलब PDF थोड़ा बहुत go through हो सकते हो थोड़े deep में. अगर कोई concept समझ में नहीं आता है, just try to search on YouTube also or Google also sometimes if I am not available. But otherwise कभी भी आप message डाल दो, I will be sharing the answers over there. Okay, once I get free from the schedule. ठीक है? Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Yeah, chalo then. Closing it. Okay, thank you everyone. Yes, Thank sir. you, sir. Okay, enjoy this Thank you, Saturday. sir. ठीक है, आपके लिए वीकेंड प्रिपरेशंस के लिए रखा हुआ है. ठीक है, चलो, थैंक यू.